Hello dear students, today we will study class 8th New Gems English Reader lesson number 1, The Adventure of Blue Carbuncle, book exercises. Page number 9. Comprehension. A. Choose the correct options and write on the blank. Mr. Watson thought he was interrupting Holmes because he was examining something, क्योंकि वो कुछ चेक कर रहे थे. Second, Peterson was left with the goose and the hat because everyone had run away from the scene. A part. I must be very stupid, Holmes, for I am quite unable to follow you. Watson didn't understand how Holmes came to his conclusions. C part. Fourth, Holmes realized that he was connected to crime when Peterson brought in the goose and the rat. So देखिए वो समझ नहीं पाया था. Fifth, Ryder had stolen the gem and then blamed the plumber. दूसरा इल्ज़ाम लगा दिया था plumber पर. Then there are question answers. The man is clever, middle-aged and used lime cream in his hair. How did Holmes come to each of these conclusions? उनको ये सब बातें कैसे पता चली? The answer is Holmes had a logical explanation for each of his deductions. Full stop. He deduced that the man was clever and had some brains, as the hat was quite large. He was middle-aged, as there were some fine grey hair in the lining of the hat. As there was quite fine smell of lime cream, so he deduced that the owner must be using lime cream. So because of these reasons, he came to deduce these things. He came to the conclusion of these things. Question number 2. Why did Mr. Baker come to see Mr. Holmes? वो Mr. Holmes से मिलने क्यों आया था Mr. Baker? The answer is Holmes placed an advertisement in the paper about a goose and a black felt hat. Children, here there is a correction, hat. That had been found at the corner of the Goose Street. Full stop. In it, Holmes asked Mr. Henry Baker to collect it from 221B Baker Street. उन्होंने ऐड निकाल दिया था कि ये सामान मिला है, जिसका भी है वो आकर के इस एड्रेस से ले ले. Okay. Question number 3 now. Trace the gem's journey in the following flow diagram. इस डायग्राम में हम ये जर्नी कंप्लीट करेंगे. The gem is stolen from the hotel. Next is it was kept by the real thief Ryder, a hotel attendant. ठीक है. नेक्स्ट पे आएंगे. The real thief goes to see his sister. Then next वाले blank में आप लिखोगे he puts the gem in the mouth of a goose bred by his sister, जिसको उसके सिस्टर ने पाला था. नेक्स्ट में आप लिखोगे it goes to Mr. Brackenridge, the goose seller, who buys the goose from her, उसकी सिस्टर से जो खरीद लेते हैं. Then next blank में आएगा it then goes to Mr. Henry Baker, who buys the same goose from Mr. Brackenridge. Next blank में आएगा it lands with Mr. Peterson, who finds Mr. Baker's goose. ठीक है बेटा? Okay, now let's move on to think and answers. How do you think Mrs. Oakshott must have felt when she heard about Ryder's involvement in the theft? मिसेस ओकशॉट को कैसे लगा होगा जब उन्हें पता चला कि उनका भाई ही उस चोरी में इन्वॉल्व था? द आंसर इज हियर. मिसेस ओकशॉट मस्ट हैव बीन इनिशियली शॉक्ड. पहले तो उन्हें झटका लगा होगा. एंड इन द स्टेट ऑफ डिसबिलीफ, और उन्हें इस बात पे यकीन नहीं आया होगा. शी लव्ड हर ब्रदर एंड एज अ जेस्चर, वो अपने ब्रदर को प्यार करती थी. हमें कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने एज अ जेस्चर शी हैड रिजर्व द बेस्ट गूज फॉर हिम एज अ क्रिसमस गिफ्ट, क्योंकि उन्होंने अपने भाई के लिए बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट सोचकर एक गूज को संभाल के रखा हुआ था. शी मस्ट हैव बीन रियली डिस्ट्रेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड एज शी वॉज चीटेड बाय हर ब्रदर. उन्हें बुरा ही लगा होगा ऑफकोर्स. She must not have expected to be deceived by her brother
दिस मस्ट हैव लेफ्ट हर डिसइल्यूजन, इससे वो बहुत भ्रमित हो गई होंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do you think happened to Mr. Ryder in the end? आपको क्या लगता है मिस्टर राइडर का अंत में क्या हुआ होगा जब उनका सस्पेंस खुल जाता है? आंसर इज होम्स मस्ट हैव लेफ्ट द क्रिमिनल बिकॉज होम्स ने उसे छोड़ दिया होगा बिकॉज ही सीम्ड रिपेंटेंट एंड स्केर्ड, क्योंकि वो बहुत पछतावा महसूस कर रहा था और घबराया हुआ था। ही मस्ट हैव मेंडेड हिज वेज एंड नेवर डेयर टू गेट इन्वॉल्व इन एनी अदर क्राइम। उसने अपनी तरीके सुलझाने की कोशिश करी होगी राइडर ने, और उसने कोशिश कभी नहीं करी होगी कि वो और किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो। ही मस्ट हैव थैंक गॉड फॉर सेविंग हिम दिस टाइम, सो ही मस्ट हैव लेड हिज लाइफ विद ऑनेस्टी एंड कंटेंटमेंट। और इसी बिलीफ के साथ उसने अपनी लाइफ ईमानदारी से और भरोसे से जी होगी, तो मिस्टर राइडर ने उन्हें छोड़ दिया होगा। नेक्स्ट आता है कुछ कैरेक्टर स्केच हमें करने हैं 2-3 सेंटेंस में। मिस्टर बेकर, मिस्टर होम्स, डॉक्टर वॉटसन, मिस्टर राइडर एंड मिस्टर पीटरसन, ये मैंने आपके लिए तैयार कर रखे हैं। यू कैन सी मिस्टर बेकर, he is an elderly, poor man whose loss of hat and a goose brings him to Holmes at Baker Street. Mr. Holmes is a famous detective who takes up the job to solve the mystery of the stolen gem. He is a man with a keen perception and observation. Next, Dr. Watson. Dr. Watson is a friend of Mr. Holmes. He made straight observations on things from which Holmes tried to get clues for the case. उनको मिस्टर वॉटसन के इन स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन से हेल्प भी मिली। He even asked for some explanation on whatever Holmes made deductions about. जो भी डिडक्शंस होम्स ने करे थे उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी मांगा। मिस्टर राइडर was the brother of Mrs. Oakshott and he is the real thief. He feels repentant and promises to mend his way. वो आखिर में पछतावा महसूस करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने तरीके सुधारेंगे। मिस्टर पीटरसन इज एन ऑनेस्ट कमिश्नर हु ब्रिंग्स द हैट एंड द गूस टू मिस्टर होम्स टू बी रिटर्न टू द राइट ओनर। वो ही लेके आए थे होम्स के पास आगे का केस सॉल्व करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट अपनी वर्ड स्टडी पर। Look at the following adjective and noun combinations. First one करते हैं, find similar adjectives to replace the ones used here. Crackling fire, spouting fire, sparkling stone, glittering stone, tired traveler, experienced traveler. Next आते हैं crumpled cloth, smelly shoes, smelly socks, memorable day, memorable holiday. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रीफिक्स बनाकर हम कुछ नए वर्ड्स बनाएंगे। आप खुद ट्राई करोगे, पंक्चुएशन आप खुद ट्राई करोगे। यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। नाउ लेट्स कम टू द ग्रामर स्टडी। चिल्ड्रन, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर डिस्कस्ड हियर। डिक्लेरेटिव विच इज़ अ स्टेटमेंट। इंटेरोगेटिव जो आपसे क्वेश्चन पूछता है। इम्पेरेटिव जो आपको एक ऑर्डर देता है या रिक्वेस्ट करता है। एक्सक्लेमेटरी जहाँ पर आप सडन सरप्राइज और शॉक फील करते हैं। इसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है। फर्स्ट, इट श्योर इज कोल्ड आउट देयर, इट्स डिक्लेरेटिव। सेकेंड, पुट योर प्लेट इन द सिंक, इट्स इम्पेरेटिव, समवन इज गिविंग एन ऑर्डर। थर्ड, सो यू थिंक यू गॉट इट राइट, इट्स इंटेरोगेटिव, आपको क्या लगता है आपने सही कर लिया। फोर्थ, Holmes couldn't sleep all night, declarative. Fifth, bring the chair here, order मिल रहा है, imperative. It's your job to do it right, ये भी एक imperative sentence है। Seventh, when will lunch be served, lunch कब तैयार होगा, question पूछ रहा है, interrogative question mark भी डाल दीजिएगा लास्ट में। Eighth, this game is going to be fun, it's exclamatory and put an exclamatory mark at the last। और इसमें भी हम इंटेरोगेटिव है, इसमें भी हम क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चेंज द फॉर्म ऑफ दी सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। इसको मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है। द आंसर्स आई एम डिस्कसिंग। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज सुनीता हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल कीपिंग हर माइंड ऑन हर लेसन्स दैट डे। आंसर इज इट विल नॉट बी ईजी फॉर सुनीता टू कीप हर माइंड ऑन हर लेसन्स दैट डे। सेकेंड आंसर आएगा, आर वेलफेयर सोसाइटी इज़ नॉट एज बिग एज दिस एसोसिएशन।
थर्ड आंसर आएगा रमेश क्लासमेट्स आर नॉट एज फास्ट एज हिम. फोर्थ आंसर आएगा हरी वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट फॉर हिज परफॉर्मेंस. फिफ्थ आंसर आएगा दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच अ ब्यूटिफुल bird. So children, these were the book exercises. I hope you have got them well. Don't try to give a thumbs up to the video. Thank you. Have a wonderful day. Bye bye.